Hi guys, this is another lecture of macroeconomics and this is the last lecture of Unit 3. In this lecture, we're going to talk about the business taxes and tax incidents. So before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. And we have already covered all the topics. So the only topic that we are left with is the last one, which is business taxes, types, rationale, and incidents. So let's get started. Okay, so we have often heard this term that tax, indirect tax, income tax, GST, business tax. So what exactly are these all about? So if I try to explain it in a very layman language, then tax basically means an obligation of all the citizens of any country towards the government. So for all the facilities that they have been using or all the services that they have been using, which are provided by the government. So, and it's a very justifiable kind of a concept because for whatever services that we have been using, it becomes our duty or responsibility, or it becomes our obligation that we um, pay something in return. Okay. And so this is the amount of money which is being collected from the corporate, which becomes the nation's income, source of income. Now, every country have different tax rules. There are certain countries which have liberal tax laws. There are countries which have stringent tax laws, which charges a very huge amount of tax from the people. And there are certain other countries which charges very low amount of taxes. So any country which is charging very less amount of taxes from you, then that is known as tax haven country. Now here, heaven should not be confused with the term HEAVEN. So यहाँ पे heaven की spelling है HAVEN, which means which heaven basically means a safe place, and here it means that a country where taxes are levied at a low rate, low tax rates होते हैं. Examples of such countries are Switzerland, Bahamas, Hong Kong, Jersey, etc. They charges very less amount of taxes from the people, and taxes are basically based on the operating earnings, which is after charging all the expenses that have been incurred so far. So these are the kinds of taxes that we'll be discussing: income tax, estimated tax, self-employment tax, employment tax, and sales tax, which comprises of all the direct and indirect taxes which are in reference of business. But before that, I want to tell you about the rationale for taxation, why exactly this concept is there. So first thing is that it forms a very important part for the government revenue, and it helps the government to meet its objective, which are economic development, full employment, and price stability. So the government will be able to fulfill all these objectives only when they have sufficient funds with them. And tax will form an integral part in generating that revenue for the government. Also, when we pay regular taxes, we are entitled to several deductions, which are again clearly defined in the tax laws. We'll be covering them in much detail in the income tax subject. Here, we just want to know what exactly are these deductions and how they actually are being deducted, which they help us. So starting with income tax. So it is the annual charge which is levied on the income. Now income can be any salary, wages, commission, dividend, or any bonus, etc. of any individual company or firm. The Union Cabinet Finance Minister decides the tax slabs. Different tax slabs होते हैं हमारे, and प्रेफरेंशियल टैक्स स्लैब होते हैं कि अगर कोई एफ्लुएंट पर्सन है, एफ्लुएंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड है जिसका, तो ही विल पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, एंड जो लोअर स्ट्रैटा से हैं दे विल पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ताकि एक इक्विटी बनी रहे कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर. And these are the certain deductions that people are entitled to. If a person is investing some amount in PPF, then he will be entitled to certain deductions. Again, life insurance premium अगर आप भरते हैं तो you will be entitled to certain deductions. Then mediclaim insurance is also there. Tuition fees for children education, जो भी tuition fees आप पे करते हैं अपने बच्चों की education के लिए, that also entitles you for deduction. Contribution to NPS,
health insurance premium, and home loan repayment. So all these, and there are several more deductions as well जो आपको मिलती हैं under different different sections, 80C, 80D, बहुत सारी deductions हैं. So we don't have to study about them in much detail. We बस introduction है ये. Then we have estimated taxes. This is a kind of self-employment tax जो कि आप अगर खुद employed हैं, खुद का employment है, आपका business है, तो आप उस पे ये pay करते हो. Then we have self-employment tax. This is a social security and Medicare tax, which is primarily for the individual to work for themselves. And this tax covers the retirement benefits, disability benefits, and hospital insurance benefits. तो ये आपके सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर को कवर करता है बेसिकली ये टैक्स जो है. एंड अगेन दिस इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ओनली. ठीक है, जो लोग खुद ऐसे एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनको ये टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है. Then next is employment tax. This is paid by the employer for their employees on the account of following things. So it covers the social and Medicare benefits. Unemployment benefits को भी cover करेगा, unemployment allowances के लिए. And the next is sales tax, which is similar to the GST, goods and services tax, which is 15%. And वो different categories के लिए different rates भी हैं. And it is basically levied for the consumption of the goods and services. जब आप उनकी सेल करते हैं उस टाइम पे ये लेवाई किया जाता है. And yeah, so this is it. So these were 5 kind of taxes that we should know when we talk about the business taxes in the business reference. Then the next thing is tax incidence. So this is basically the division of the burden of tax between the buyer and seller. And to understand this better, you should be able to understand the difference between the elastic and inelastic demand. I hope you have done it in the microeconomics in your last semester. So I'll just briefly explain you what it means. Elastic demand means when the price of any product, of the given product, affects the demand of the product. We all know that there are several factors जो कि affect करते हैं. हम यहाँ पर अभी सिर्फ price elasticity की बात कर रहे हैं. So if the demand is elastic, which means that the demand gets affected with reference to the price, यानी कि अगर price में alteration कर रहे हो तो demand पे भी बहुत ज़्यादा change आ रहा है, then the product is elastic, the demand is elastic. And if there is another product जहाँ पे आप price को alter कर रहे हो but the demand is not getting affected, then that is inelastic. And inelastic तभी होगा when the nature of product is of a necessity item या फिर वो habitual item है. So उसी केस में जो है वो inelastic होता है. यहाँ पे हम exceptions की बात नहीं करेंगे, हम normal goods की ही बात कर रहे हैं. तो gift goods वगैरह उन सब चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे. So normal cases में अगर आपकी कोई necessity item है, habitual item है, तो उस केस में the demand will be inelastic. For example, medicines का एक example अगर दूँ, if a person is admitted in ICU and the doctor comes to the family and says कि ये एक medicine है, ये लेकर आनी है, and the prevailing price, जो existing price था वो 100 था, but अभी recently उसमें कुछ high हो गया तो वो medicine अब 200 या 300 की मिल गई. So you will still buy it because वो एक necessary item है. And ऑब्वियसली आप किसी को मरने तो नहीं छोड़ दोगे ना 100 रुपए के ऊपर. तो ये एक नेसेसिटी आइटम है, इसीलिए इसकी जो डिमांड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप प्राइस को कितना भी ऑल्टर कर दो. सो द डिमांड इज इनइलास्टिक हियर. Another example would be of habitual item, for example cigarettes and alcohols. आप उनके प्राइस को कितना भी ऑल्टर कर दो, जो लोग उसके हैबिचुअल हैं, जो लोग वो कंज्यूम करते हैं, they will still go for it. And in a totally different scenario, if I talk about elastic products, तो अगर हम and elastic जो डिमांड होती है वो यूजुअली उन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोक या पेप्सी, तो इफ आई इन सबके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो सेम है. सारी 500 ml की बॉटल जो है वो 30 या 35 रुपीज़ की ही आती है. ठीक है, तो ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं होती इनके प्राइस में, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वर्क करते हैं. तो एक भी अगर चेंज करेगा तो दूसरे को नुकसान होगा, तो फिर ये सेम रखते हैं प्राइस. तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीज़न से अगर कोक ने अपना प्राइस जो है वो
500 ml की बॉटल के लिए लेट्स से उन्होंने कर दिया है 100 रुपीज. So in that case, people will automatically shift their demand to other products which are available as substitutes. वो या तो पेप्सी कंज्यूम करेंगे या फैंटा कंज्यूम करेंगे या ड्यू कंज्यूम करेंगे, कुछ भी कंज्यूम करेंगे, बट दे विल स्टॉप बाइंग दी कोक. एंड यहाँ पे प्लीज मैं उन कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो ब्रांड लॉयल हैं, तो वो भी अगेन उनके लिए भी वो डिमांड जो है वो इनलास्टिक हो जाएगी, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम नॉर्मल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं. तो वो क्या करेंगे, वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे एंड वो सब्सटीट्यूट्स की डिमांड को इंक्रीज करेंगे. तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक हो गया. तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका टैक्स इंसिडेंस जो है वो बेस्ड है. इफ द डिमांड इज इलास्टिक, द टैक्स बर्डन विल बी डिवाइड ऑन द supplier, and if the demand is inelastic, then the tax burden will be levied on the consumer या buyer. ठीक है. जैसे अगर आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो अगेन वही सेम चीज अप्लाई होगी कि हैबिचुअल आइटम्स में या नेसेसिटी आइटम्स में या जो आप ब्रांड लॉयल्स की अगर हम बात करें तो वो अभी भी उसकी डिमांड उतनी ही करेंगे उस प्रोडक्ट की, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. टैक्स बढ़ने की वजह से अगर आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, they will still go for it, they will still buy it. Okay, but in the other situation जहाँ पे आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक है, उस केस में if you are going to buy it and आपका जो टैक्स है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ गया है, तो people would stop demanding it. उसकी डिमांड कम हो जाएगी and the producer will definitely don't want that, क्योंकि उनका कॉस्ट लगी हुई है, तो अपनी कॉस्ट को रिकवर करना चाहेंगे एंड सेल्स तो वो चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि कम सेल्स होना बेटर है इससे कोई भी सेल्स ना हो. तो डेफिनेटली वो जो टैक्स का वर्डन है वो खुद पर लेंगे या फिर वो शेयर करेंगे दोनों पार्टीज में, या ज्यादा पोर्शन अपने पास रखेंगे, कम पोर्शन आपके पास रखेंगे, डिपेंड्स. सो दिस इज टैक्स इंसिडेंस, जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा ऑन द परचेज ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी. So this is it. This is about tax incidents, and the homework for today's lecture is that you have to tell me what are the different kinds of business taxes and what tax incidence is. And if you have any doubt, you can drop me a message and I'll be happy to resolve your queries in the next lecture. And we can take a doubt session also. So this is it about today's lecture. Thank you.